स्विमिंग पूल आप खुद मेंटेन कर रहे हैं। हिंदुस्तान में क्या होता है ना कि हम लोग की सोसाइटी में भी लगभग इतने ही बड़े स्विमिंग पूल हैं जितना आपके घर में, और हाँ जनरली हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं और नेग्लेक्टेड रहते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आप इस तरह से अपने घर का स्विमिंग पूल मेंटेन कर पा रहे हैं, तो एक जो सोसाइटी में जिसमें 100-150 फ्लैट या 50 फ्लैट्स होते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते हैं? इस सापेक्ष में थोड़ा-सा आप बताने की कोशिश करिए कि हाउ ईज़ी इट इज़ एंड हाउ ईज़िली यू आर एबल टू डू इट। It is it is not it is easy in a way if you follow the rules. मैंने तुमको ईमेल में आपको मैंने ईमेल में भेजे हैं जो चीजें मॉनिटर करते हैं हम और आपको मैंने पिक्चर्स भेजी हैं। आपने देखा है कि वो मेरा पूल कितना क्लियर है। यू कैन सी द बॉटम, एकदम से ऐसे पता लगता है जैसे पानी है ही नहीं है उसमें। इट इज सो क्लियर यस, इन यस। तो एंड देन उसमें सबसे बड़ी चीज है कि क्लोरीन और पीएच को मेंटेन करके रखना। ओके, क्लोरीन शुड बी बिटवीन 2 to 4 ppm एंड देन pH should be between pH is between 7.4 to 7.6 pH रखते हैं हम उसमें। Or then there are some other, basically alkalinity and calcium hardness. Then there is a stabilizer which holds the chlorine in the water for a longer time. So we do that. And बेसिकली ऐसा होता है, हम क्लोरीन नहीं, एक चीज है कि क्लोरीन हम नहीं डालते हैं पानी में। हमारा जो पूल है वो सॉल्ट वाटर पूल कहलाता है। हम उसमें नमक की बोरियां डालते हैं। तो मैंने इसमें कम से कम 400 kg जो है वो नमक डाला हुआ है उसके अंदर में सॉल्ट है। तो वी मेंटेन सॉल्ट समवेयर बिटवीन 2000 to 3000 ppm। उसमें वेरी इजी एक्चुअली, अगर आप देखें उसमें MKS सिस्टम में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट कि पीपीएम में कितना सॉल्ट डालना है। क्योंकि अगर आप 1 किलो वाटर लें, दैट इज अबाउट 1 लीटर, राइट? दैट इज अबाउट 1 लीटर। यस। सो अगर आपका पूल जो है वो 20,000 लीटर का है, अगर आपका पूल 20,000 लीटर का है तो उसमें 3000 ppm के लिए उसको मिलियन में कन्वर्ट करके देन यू कैन सी हाउ मेनी पाउंड्स, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट यू नीड इन देयर। और फिर मैंने आपको पिक्चर में एक और भेजा है जो कि हमारा पंप है जो चलता है, सर्कुलेट करता है, एंड देन फिल्टर देयर व्हिच इज अ सैंड फिल्टर व्हिच सैंड्स अप ऑल द एलजी वगैरह जो ग्रोथ होती है उसको वो फिल्टर्स आउट एंड देन वी बैक वॉश दैट। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, व्हेन द सॉल्ट गोज थ्रू द सॉल्ट क्लोरीन जनरेटर, एक छोटी सी ट्यूब सा मैंने पिक्चर आपको भेजी है, दैट इज अ क्लोरीन जनरेटर। उससे जब सॉल्ट पास होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें। इलेक्ट्रोलिसिस की प्लेट्स हैं उसमें, एनोड्स एंड कैथोड्स। तो दे ब्रेक द सॉल्ट into chlorine and sodium. So sodium combined with something else, because sodium is a very active, maybe I do not know that much chemistry, but maybe sodium sulfate or anything. And the chlorine it releases goes into the water. And it maintains the chlorine between 2 to 4 ppm, parts per million in there. And then we test water almost once a week for all the parameters which I sent you in there. अगर पीएच ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा म्यूरेटिक एसिड डाल देते हैं लो करने के लिए। अगर एल्कलिनिटी कम है तो हम उसमें वो बेकिंग सोडा डाल देते हैं उसमें थोड़ा सा। तो उससे एल्कलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे उसको मेंटेन करते हैं, and it requires constant attention. And then there's a pool cleaner too which goes through that. You saw that
It's a suction-based pool cleaner which pump sucks it, and it goes in the bottom of the pool and sucks out everything which is fallen into the pool. कुंद्रा जी, हमें ये बताइए कि आपका स्विमिंग पूल शायद 20 KL का है, 20,000 लीटर का, ये इससे बड़ा है? हमारा पूल जो है 20,000 गैलन का है. It is approximately 75,000 liters. Okay, so it is as big as a normal pool. Yes, yeah. दूसरी बात मुझे आपसे ये पूछनी है कि जनरली प्रॉब्लम इस बात की आती है कि इंडिया में तो धूल भी है, रहती है, मिट्टी भी होती है, पत्ते भी गिर जाते हैं, उनको साफ करने के लिए अगर रोज साफ ना करें तो समस्या हो जाती है। और आप तो कह रहे हैं कि मैं वीक टू वीक उसकी सर्विसिंग करने के लिए शायद 1 घंटा का समय निकालना पड़ता होगा आपको। हाँ, देखो फिल्टर्स तो क्लीन करने ही पड़ते हैं. That you have to clean filters and you have to backwash the those skimmers हैं जो जहाँ पे पानी ऊपर से जाता है वो स्किमर कहलाते हैं, और जो बॉटम ड्रेन है जो नीचे पूल में होता है, दोनों होते हैं. तो दोनों के बाद में फिल्टर लगे होते हैं, वो फिल्टर चेंज करने होते हैं. एंड देन जो हमारा जो बड़ा वाला सैंड फिल्टर है उसको बैकवॉश करते हैं once a week. Okay? तो आपको इसको पूल को मेंटेन करने के लिए किसी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ती? इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस और अपना आप मैनेज कर लेते हैं अकेले? It is not that automatic, but you need to. I being chemistry थोड़ी बहुत physics थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो उसके हिसाब से you got to monitor the chemistry and physics, and it works great. I used to have a pool service who will come and service a pool every week, but they were not very literate people. They were उन्होंने शुरू किया हुआ था, आके फिल्टर क्लीन कर जाएंगे, but they would mess up the pool more than I would say, so it costed me a lot more money. तो then उसके बाद मैंने बोला कि आप लोग जाओ, I'll manage it myself. So I test the pool water and accordingly I treat it. So उदय, आप तो खुद इंजीनियर हैं और बाकी लोग जनरली ये काम आउटसोर्स करते होंगे वहाँ भी, यूएसए में। yeah, most of the people outsource here. Yes, yeah. तो आपको ये लगता है कि जो लोग आउटसोर्स करते हैं उसके मुकाबले आप जो क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं? मैंने खुद देखा है, पानी बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही क्लीन है और बड़ा अच्छा लगा देख के, और उसी से मोटिवेट होके मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, जो नेग्लेक्टेड पड़े हुए हैं, हमारे कई मित्रों की सोसाइटीज़ हैं, नेग्लेक्टेड पड़े हुए हैं पूल, तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ सीनियर सिटीजन्स आपकी तरह ऐसे एक्टिव रहें और 1 हफ्ते में नहीं 15 दिन में भी अगर सर्विस करना चाहें तो पूल मेंटेन हो सकता है क्वाइट इकोनॉमिकली। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए हैं. There are systems with technology which will give you all the analysis on regular basis. अभी मैं एक जगह पे गया था तो वहाँ पे पूल एनालाइजर था, वो ऑनलाइन में लगा दिया हुआ है, तो it gives you online data all the time that how your pool is doing with all the chemical measurements. अच्छा कुंद्रा जी, आप ये बताइए, यूएसए में क्या दुनिया में ही पानी की कमी होती जा रही है? आपको ये नहीं लगता कि ये electrolysis chlorine system, all swimming pools, as well as having a filtration system, which we explained in the previous video, must have a disinfection system to avoid the proliferation of bacteria, algae, and microorganisms in the water. To keep the water and all the other components of the pool disinfected, different oxidant products are used, as well as complementary systems such as ozone, ultraviolet, and copper silver, which we will talk about in another video. The most common disinfectant systems are chlorine, bromine, and hydrogen peroxide. Chlorine is most popular for domestic swimming pools and is easily available in tablet or liquid form. As chlorine is found naturally as a gas, it needs all kinds of stabilizers
and chemical products to transform it into a solid or liquid format. And these chemicals accumulate in the swimming pool, making it necessary to change the water every so often. A more natural way to obtain chlorine is the salt electrolysis system, which generates the chlorine directly at the pool by using salt. It's like a small chlorine factory at home. When we install a salt electrolysis chlorine system, we must add between 3.5 and 5 grams of salt per litre of water to our pool. To get a rough idea, the water in the Mediterranean Sea has 35 grams per litre, or an eye wash has roughly 7 grams per litre. Therefore, our swimming pool will get an almost imperceptible hint of salt. To sum up, the performance of this equipment uses an electrolytic cell to separate the salt molecules dissolved in the water. When the slightly salted water passes through the cell, it separates the chlorine from the sodium, which together form the salt, making the chlorine act as a natural disinfectant and oxidant. The separation of the salt molecules lasts for a few hours, which is when the chlorine acts as disinfectant. Once this time has lapsed, the molecules join again and become salt once more. As the salt is not consumed, just transformed time and time again, it is not necessary to add more salt like other consumable materials. You must only add the amount of salt lost when the filters are washed once a year. Most of the chlorine used in a swimming pool is to avoid bacteria and biofilm proliferating in the filter when sand is used as a filter medium. Using NatureWorks filter glass dramatically reduces the growth of bacteria and biofilm inside the filter, and therefore optimizes the performance of the electrolysis equipment. NatureWorks is the perfect complement for this kind of equipment. In conclusion, the salt electrolysis system is a much more natural and environmentally friendly system than adding chlorine to the water. It is important to use the appropriate sized equipment, taking into account the size of the pool and the amount of people that use it. Certain chlorine generators have a built-in automatic pH acidity regulator system, which is one of the most important parameters to keep our swimming pool's water perfectly balanced. But we will leave this for another video. पूल जो हैं पानी वो काफी वेस्ट होता है. पानी हैज बिकम वेरी प्रीशियस कमोडिटी. तो आप क्या सोचते हैं कि पूल्स को एनकरेज करना चाहिए? पानी कितना वेस्ट होता है इससे, और उस वेस्टेज को बचाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएं. देखिए, जो पूल है, आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर फैमिली एक्टिविटी, और पूल में इतना पानी नहीं लगता है. वंस यू स्टॉप द लीकेज एंड ऑल दैट, आपका पूल अगर टाइट है तो उसमें इतना पानी की जरूरत नहीं है. वो इवेपोरेशन होता है तो वो इवेपोरेशन आप उसमें थोड़ा सा कर देते हैं उसमें, पर इट डिपेंड्स करता है यूसेज के. ये जो है वो यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है पूल. एंड जो यूसेज है पूल का, वो ये बहुत जगह पे पूल होते हैं, लोग यूज नहीं करते हैं. यूज करने के कई रीजन होते हैं. कुछ लोग पानी में नहीं जाना चाहते हैं, कुछ जगह पे पानी साफ नहीं होता है इसलिए नहीं जाना चाहते हैं. एंड जो क्लोरीन जो है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसइंफेक्टिंग द पूल. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट जैसे पानी, पीने के पानी में आपके क्लोरीन कंट्रोल होना चाहिए, और पूल में भी क्लोरीन का कंट्रोल होना चाहिए. मैं ये जानना चाहता हूँ, केस दे रहा हूँ, लीकेज के बारे में आपको बताता हूँ. जो ज्यादातर लीकेज जो होता है, ज्यादातर लीकेज जो होता है वो होता है म्युनिसिपल कमेटी की पाइप से, और आपके घरों में लीकेज होता है मोस्ट ऑफ द वाटर. उसका मैं एक केस बताता हूँ आपको. कुंद्रा जी, ये बताने से पहले मुझे ये बताइए कि स्विमिंग पूल में एक बार आपने टॉप अप कर दिया पानी से, उसके बाद ये टॉप अप कितने दिन तक चल सकता है?
या इसको पूरा ड्रेन आउट करके क्या जरूरत पड़ती है कि दोबारा पूरी फिलिंग की जाए, फ्रेश फिलिंग की जाए, और ऐसा कब जरूरत पड़ती है? ऐसी जरूरत बहुत कम पर इस साल जैसे ये कितनी बारिश होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके यहाँ बारिश बहुत होती है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और एक्चुअली हमें इस साल जो है वो पानी निकालना पड़ा, क्योंकि बारिश से पानी पूल में बहुत बढ़ गया, एंड देन यू हैव टू पुट मोर। आई हैव नॉट टॉप्ड माय पूल दिस ईयर। आई हार्डली हैव टू top it when it goes low. Probably साल में एक आध बार थोड़ा सा पानी डालना होगा, मे बी चार। पर बारिश से पानी अंदर आता रहता है। अगर आपके पूल में पानी लीकेज नहीं है तो देन यू डोंट हैव टू टॉप इट अप। अच्छा, एक चीज कुंद्रा साहब मैं ये और जानना चाहता हूँ, हमारे हाँ जी। स्विमिंग पूल के दोनों साइड में बोरिंग है और हमारे पानी के टैंक भी वही हैं, और मैं सोचता हूँ कि गर्मियों में पानी का टेबल नीचे चला जाता है, तो स्विमिंग पूल के अगर भरा हुआ हमारा है तो उससे कुछ वाटर टेबल इम्प्रूव हो सकता हो, या इस तरह की कोई प्रोसेस हो तो आपकी जानकारी में हो बताएं। अगर नीचे से बॉटम खुला हो तब तो आपका पानी नीचे चला जाएगा। तो स्विमिंग पूल इज सील्ड, कंप्लीटली सील्ड। ये तो डब्बा है जिसमें पानी लीक नहीं होता है। एंड जो वाटर टेबल जो नीचे जाता है उसके लिए आपको रेन की रिकवरी करनी होगी, रिकवरी सिस्टम्स लगाने होंगे ताकि पानी वहीं पे सोक हो जाए, बहे नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि it rains so much that the water runs away into rivers and gets wasted. तो अगर हम रेन हार्वेस्टिंग कर सकें तो वो सबसे अच्छी चीज है। और यहाँ पे भी हमारे यहाँ जहाँ पे इस दिस पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे कि बारिश एक साथ 8-8 इंच के करीब बारिश हो जाती है। 8 इंच कितने हो गए आपके? इट्स ऑलमोस्ट it's almost 20 centimeters of rain, you know. तो वो पानी के बहाव को रोकने के लिए, रिवर्स में पानी जाने से रोकने के लिए हमारे यहाँ दे कॉल इट स्टॉर्म वाटर पॉन्ड्स। तो हमको हर जितनी जमीन कवर्ड है कंक्रीट से उसके हिसाब से स्टॉर्म वाटर पॉन्ड बनाने पड़ते हैं हर प्रॉपर्टी में। तो जो बारिश का पानी है वो स्टॉर्म वाटर पॉन्ड में चला जाता है एंड देन वो धीरे धीरे जमीन में चला जाता है। तो दैट कीप्स द वाटर टेबल हाई इन दैट केस। नहीं, मेरी सोच यही थी कि अगर आपको कभी स्विमिंग पूल खाली करना ही पड़े किसी वजह से, तो पंप करके उन पॉन्ड्स में पानी डाल दिया जाए जिससे कि वो पानी इस्तेमाल हो सके बेहतर तरीके से। स्विमिंग पूल आप कभी भी खाली नहीं करते। अच्छा। ओनली टाइम ये खाली करते हो जब अंदर से लीक होना शुरू हो जाए, वो टूट जाए अंदर से। हमारे यहाँ जो पूल है उसमें आप देखोगे तो वो वाइनल लाइनर है। It is not a concrete, and it is not and it is not ऐसा मटेरियल जो कि पोरस हो। इट इज अ वाइनल लाइनर, प्लास्टिक का लाइनर है अंदर में लगा हुआ। और आपके यहाँ भी अगर पूल कंक्रीट के तो हैं उसमें मार्साइट जैसी चीजें अंदर में वो प्लास्टर करते हैं ताकि पानी वहां से लीक ना हो। इट शुड होल्ड द वाटर। थैंक यू वेरी मच कुंद्रा जी। Better, a saltwater pool or a chlorine pool? Saltwater pools tend to have gentler, smoother water than other pools, and you only need to add salt once or twice a year to keep things sanitized. But you're still technically swimming in a pool with chlorine, and saltwater generators are expensive to buy and more complicated to maintain. So before you switch to a saltwater system, here's everything you need to know about saltwater pools versus chlorine pools. Let's dive in. Real quick, before we continue, if you want more help taking care of your pool, be sure to grab our free pool care cheat sheet at swimuniversity.com/cheat sheet. It's totally free and will help keep your pool clean and clear all season long. First, what is a saltwater pool?
A saltwater pool uses a saltwater generator, also known as a salt chlorine generator, to convert salt to chlorine. That's right. A saltwater pool still sanitizes your water with chlorine. But instead of buying and adding chlorine tablets or granules to your water, you're buying and adding pool-grade salt. And that salt is used by the saltwater generator to make chlorine. And that salt stays in the water, getting recycled and reused by the generator as it continues to maintain your chlorine levels. Again, this is not an alternative to a chlorine pool. It's just a different process of making chlorine. So, what are the benefits of a saltwater pool? Here are a few reasons why a saltwater system is a great investment. 1, you add salt to the water instead of adding chlorine. Handling pool-grade salt is a lot safer and easier than chlorine pucks or granules. And as the saltwater generator uses the salt to produce chlorine, the salt gets recycled back into the water and reused again. That means you usually only add salt at the beginning of pool season or if a heavy rainstorm dilutes your pool water. You're not constantly buying, adding, and adjusting your levels like you need with chlorine. And pool-grade salt is much cheaper and simpler to buy than chlorine. A saltwater pool can be worth it just to never have to add chlorine again. 2, the water is gentler and smoother. Saltwater pools have a smoother, silkier water. Some people who are normally irritated by chlorine pools find saltwater pools to be much gentler. 3, the chlorine levels stay stable. Because the saltwater generator monitors and releases a slow, steady output of chlorine, the chlorine levels stay consistent. And since the chlorine levels are consistent, saltwater pools can avoid problems like algae and cloudy water. Fewer drops in chlorine levels also means fewer chloramines, which is a chlorine byproduct that causes that nasty chlorine-like smell in pools. However, there are downsides to a saltwater pool. 1, it's an expensive initial investment. It can cost several $1,000s to convert a chlorine pool to a saltwater system. That includes purchasing the saltwater generator itself and the labor to install it. 2, the saltwater generator maintenance is more complex and expensive. Saltwater generators and the salt cells inside need to be inspected and cleaned regularly, and you'll need to replace your salt cell every 3 to 7 years, which can cost another few $100s. While you won't need to constantly buy chlorine tablets or granules, you will need to use more electricity to keep your saltwater generator running and producing chlorine. And if you ever need any major repair or maintenance to your system, you'll likely need to hire a specialized professional. 3, it's not totally hands-free. While it's easy to get excited about never having to manually add chlorine to your water again, you'll still need to perform regular pool maintenance checks on your water and your saltwater system. This includes regularly testing your water, especially your pH. pH tends to drift higher in saltwater pools, and pH above 7.6 can lead to skin irritation, burning eyes, and scaling on your pool equipment. 4, saltwater generators don't work in colder temperatures. These systems won't produce chlorine if your water is 60 degrees Fahrenheit or below. So if you're in a colder climate without a heater, your chlorine production will stop when the temperature drops too low. 5, it can corrode pool parts. While saltwater isn't harmful in average doses, it can start to break down equipment if it starts to build up. Automatic pool covers, pool liners, metal pool equipment, and even natural stonework near the pool can start to erode with too much saltwater exposure. So, is a saltwater pool worth it? You won't need to constantly buy and add chlorine to your water. It's gentler on your skin and eyes with a softer, silkier feel, and your chlorine levels will remain stable, keeping your water sanitized. But it has a higher initial investment and comes with ongoing maintenance costs. You may experience chronically high pH levels. You'll need to monitor your saltwater generator, and the saltwater may corrode some pool fixtures. Given the lifespan of a saltwater generator and how often you'll need to repair or replace parts, you'll probably spend the same as you would maintaining a chlorine pool. But it's worth it for a better swimming experience and never having to handle chlorine tablets ever again. If you need more help with pool maintenance, grab our free pool care cheat sheet at swim